Hello and welcome to this new tutorial. And today in this tutorial we shall talk about the concept of theocracy. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे और जानेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ थियोक्रेसी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ थियोक्रेसी। वेल, थियोक्रेसी literally means rule by God. It is the principle that religious authority should prevail over political authority. So it is very obvious to understand that theocracy basically believes in the principle that religious authority should be above all over the political authority. That means in a state should be based on religious authority. State should have a theocracy as a system of governance and not a political authority. Therefore, we need to understand here that theocracy as a concept basically believes that the state should be run or governed according to the rule by the God. The God should be the highest authority above all the political authority in the state, and therefore the state should be governed according to the concept and according to the rule by God, and such system would be called as a theocracy. Theocracy का लिटरली अगर हम मीनिंग समझेंगे तो वो होता है कि रूल बाय गॉड, मतलब भगवान रूल करते हैं स्टेट के ऊपर। और इसका जो प्रिंसिपल है ये बहुत सिंपल है कि स्टेट में रिलीजन जो रहेगा या फिर रिलीजियस जो अथॉरिटी रहेगी ये सबसे बड़ी अथॉरिटी रहेगी और इसका जो पावर रहेगा वो सभी के ऊपर रहेगा। मतलब अदर्स जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ होते हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस, इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू रिलीजन के हिसाब से गवर्न की जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर हम थियोक्रेसी को समझेंगे तो यही सिस्टम है जहाँ पर स्टेट या नेशन को गवर्न किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी रिलीजियस टीचिंग्स। और ऐसी स्टेट में जो लीडर रहेगा या फिर जो स्टेट का जो फेस रहेगा वो थियोक्रेसी रहेगी और रिलीजन जो रहेगा वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी और देश या फिर स्टेट को गवर्न किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल सेट बाय द गॉड। सो दिस इज इन शॉर्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थियोक्रेसी। मूविंग फॉरवर्ड, अ थियोक्रेसी इज देयरफॉर a regime in which government posts are filled on the basis of person's position in the religious hierarchy. That means all the positions in the government, all the vacancies in the government will be filled, and the basis of these posts and the position in this government would be filled according to the basis of a person's position in the religious hierarchy. So anybody who enjoys certain rights, certain position within the religious hierarchy, only those people would be given chance to represent the state or to acquire those government positions. यहाँ पर इस regime में simple है कि जो गवर्नमेंट पोजीशंस रहेंगे या फिर गवर्नमेंट जो पोस्ट रहेंगे उनके ऊपर सिर्फ उन्हीं इंसानों को चांसेस मिलेंगे जो इंसान अपने रिलीजियस हायरार्की में किसी पोजीशंस पे रहेंगे। मतलब एक सिस्टम में, ऐसी स्टेट में जो भी कोई लोग जिनका अच्छा कांटेक्ट रहेगा विद इन उस रिलीजियस हायरार्की में, तो उन्हीं लोगों को ये गवर्नमेंट पोस्ट मिलेंगे और वैसे ही लोग इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। दैट मीन्स एनीबडी हु डज नॉट एन्जॉय certain position within that particular religion
or in that hierarchy of religion, that person will not get a chance to acquire these government positions. So therefore theocracy is a regime in which government post will be filled on the basis of person's position in the religious hierarchy. Whereas when we see such kind of a things in a secular state, then we have a contrast situation in a secular state. In secular state, in which political and religious positions are kept strictly separated. So when we see that in a secular state, such political post or government post are kept strictly separated away from political and religious positions. That means in secular state, politics and religion does not mix. Politics has its own importance, it has its own space, and religion has its own position and it has its own importance as well. So in secular state, religion and politics does not mix or does not meet with each other, rather they function separately with its own space and positions. अगर हम यही सिस्टम अगर सेकुलर स्टेट में देखेंगे तो वहाँ पर जो कानून है, व्यवस्था है, वो बहुत सिस्टमेटिकली उसको पोजीशन किया गया है, और सेकुलर स्टेट में पॉलिटिक्स और जो रिलीजन है वो मिक्स नहीं होते, वो अपने हिसाब से फंक्शन करते हैं, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर और रिलीजियस एक्टिविटीज़ अपनी जगह पर। और इसीलिए सेकुलर स्टेट में जो रिलीजन्स है या फिर किसी भी धर्म के लोग आप ले लो, सबको अपना अधिकार है, लेकिन ये रिलीजन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ सेकुलर स्टेट, राइट? And therefore the importance is given to the political activity. So these are the two differences what we find as far as governing of the state in a theocracy is concerned or secular state is concerned. Therefore moving forward, we have to understand that theocratic rule is illiberal or narrowly can be explained into two senses. First, it violates the distinction between the private and public realms, in that it takes religious rules and precepts to be the guiding principles of both personal life and political conduct. So therefore here we need to understand that at the first place, when we understand theocratic rule in a very basic sense, then we understand here that here it fails to distinguish between private and public realm. We have to understand that a private space is obviously different from a public space, and here in theocracy it fails to distinguish between the private and public realm. It takes everybody together, and therefore it gives more importance to religious rules and issues a command, and through that command, in fact that command, religious command, becomes a guiding principle for both personal and political conduct. And therefore we have seen in theocracy that it is a rule by God which influence and which commands everybody together without making any differences between the personal life and political life. It actually conducts its operations, or it operates together without making any distinction between personal life and political life. And this is the biggest problem, because we have to understand in any state for that matter, individuals have their personal life, they have a space for their personal activity as well as they have a space for a political activities. And when we don't give them this space and when we put them together, then obviously it creates a problem. Whereas therefore in theocracy, this is exactly the space what they are talking about. And therefore the first very important point to understand theocratic rule is that it violates the distinction between the private and public space, which is the most important aspects when it comes to any state. यहाँ पर एक बात हमें समझनी है कि जो थियोक्रेसी जो सिस्टम है ये कोई डिफरेंस नहीं करती है बिटवीन प्राइवेट और पब्लिक स्पेस में, और सबको एक साथ लेकर जाने की कोशिश करती है। और अगर सबको एक साथ अकॉर्डिंग टू रिलीजियस रूल उनको
संभालना है, तो जो कमांड होता है रिलीजियस प्रिंसिपल्स का, यही वो यूज़ करती है टू बाइंड बोथ द पर्सनल लाइफ एंड पॉलिटिकल कंडक्ट। और यही प्रॉब्लम है, और इसी की वजह से थियोक्रेसी में आपको प्राइवेट स्पेस नहीं मिलेगा और पब्लिक स्पेस भी नहीं मिलेगा। Second most important aspects of understanding theocracy is that it invests political authority with potential unlimited power, because as temporal power is derived from the spiritual wisdom, in this type of regime it cannot be based on the popular consent or be properly constrained within a constitutional framework. It's very obvious that in theocracy the political authority has all the unlimited power, okay, because this power comes from a temporal power which is derived from the spiritual wisdom, and it cannot be based on a popular consent the way we have it in any democratic framework. Here there is no democracy. It is all about giving the political authority unlimited power because the state is theocracy. और यहाँ पर एक बात बहुत समझनी इम्पोर्टेंट है कि थियोक्रेसी में जो पॉलिटिकल अथॉरिटी रहेंगे, जो स्टेट को चलाएंगे इन थियोक्रेसी, उनको अनलिमिटेड पावर मिलेगा, और ये अनलिमिटेड पावर उनको ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअल विजडम, बिकॉज स्टेट इज रूल्ड बाय थियोक्रेसी और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द गॉड। और जिस तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है कि पॉपुलर कंसेंट होता है या कोई जो फ्रेमवर्क है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो सारा पावर है, जो सारा पॉलिटिकल पावर है, दैट हैज़ अनलिमिटेड पावर, और ये जो पावर आता है वो पूरा स्पिरिचुअल विजडम से आता है, क्योंकि स्टेट थियोक्रेसी के अंडर काम करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ थियोक्रेसी. I hope you have understood this concept. Thank you very much for watching this video, and I will see you soon in next tutorial. Till then, take care.